Hello students. So due to some personal and professional reason, I was unable to upload the videos. So now I'm going to start the part 4 of semiconductor physics. So आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है. As you know, हम लोग यूनिट 1 का लास्ट पार्ट आ गए हैं, जिसका मेन आज हम लोग क्या करेंगे. सम इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन एज वेल एज fermi-dirac इक्वेशन, पॉइसन कंटिन्यूटी इक्वेशन, एज वेल एज डीप करंट, डिफ्यूजन करंट, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. ओके, सो नाउ टुडे वी स्टार्ट द इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन टॉपिक. इक्विलिब्रियम carrier concentration. Okay, so now this equilibrium carrier concentration, तो ये previous वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि how intrinsic and extrinsic semiconductor can be classified, what are the intrinsic semiconductors and intrinsic semiconductors, and how intrinsic semiconductor can be converted into extrinsic semiconductor by the concept of doping. Now आज हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, पहले मुझे जानना पड़ेगा इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड. तो इक्विलिब्रियम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जानने से पहले मुझे पता करना पड़ेगा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में पहले मुझे पता करना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय carrier. So carrier in this semiconductor, carrier basically who carries the charge. So in case of semiconductor, carrier refers to the term, the carriers refer to uh, carriers who carry the charge. So sometimes we can also call the carrier as charge carriers. चार्ज कैरियर. सो दैट मीन्स जो मेरा चार्ज को कैरी करता है, दैट इज नथिंग बट कैरियर. So now if you cleared about the previous videos, then obviously you can find the concept of charge carrier. So charge carrier, एक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर. एक तो होता है कि मेरा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता है तो द अदर टाइप ऑफ चार्ज कैरियर. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, द charge carrier can be classified into two parts. One is majority charge carrier, and second one is minority charge carrier. दोनों टर्म से हम लोग काफी वेल नोन है. दैट जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, एक सेमीकंडक्टर में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, इट इज कॉल्ड मेजोरिटी. एंड जो चार्ज कैरियर अमाउंट में ज्यादा होता है, दैट इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक उसका उल्टा होता है, जिसका अमाउंट कम रहता है दैट इज माइनॉरिटी. एंड जो चार्ज कैरियर कम अमाउंट में रहता है, दैट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो अगर हम लोग एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, n-type semiconductor. So in n-type semiconductor, we all know that number of negative charge carriers is greater than positive charge carriers. So number of electron is greater than number of holes. So in that case, electrons are the majority charge carrier. And holes are the minority charge carrier.
तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ऑब्वियस, that is in case of p type semiconductor your number of electrons is less than number of holes, so electrons are the minority charge carrier and holes are the majority charge carrier. So it is not mandatory that always electrons will be the majority charge carrier and holes will be the minority charge carrier. It can be varied as per your type of semiconductor. तो अगर N type semiconductor, in that case, majority charge carriers are electrons, minority charge carriers are holes, and in case of P type semiconductor, majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electron. Okay. Now, what happened in intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor, the number of majority charge carrier is equal to number of माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो दैट मीन्स यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर जितना है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी उतना है. सो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं देयर आर नो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओनली देयर आर charge carriers in semiconductor, intrinsic semiconductor, that is electrons and holes. So number of electrons equal to number of holes. So this condition is known as equilibrium charge concentration. That means whenever equilibrium charge condition equilibrium carrier concentration is the total number of carriers in the conduction band and valence band with no externally applied bias. Okay, so इसको हम अगर define करेंगे तो we will see that, or we can write equilibrium charge, sorry, not charge, equilibrium carrier concentration is the total number of carriers. See, in equilibrium carrier concentration, that is for intrinsic semiconductor, no need to mention majority charge carrier and minority charge carrier because both are equal. So if both are equal, so no meanings of mentioning majority charge carrier or minority charge carrier. Okay, so total number of charge carriers in the conduction band and valence band with no external bias, that means without doping, the total number of charge carriers or total number of carriers in conduction band and valence band is known as equilibrium carrier concentration. Okay, so now suppose if we are going to disturb this equilibrium by using doping, that means whenever we are going to doping. So that means whenever intrinsic semiconductor is converted to its corresponding extrinsic semiconductor, irrespective of p type or n type, whatever it may be. But if once doping will be there, that means we are disturbing the equilibrium condition or we are disturbing the equilibrium carrier constant. Then what happened? Suppose let take an example like example there. Now suppose at equilibrium condition number of electrons मेरा 5 है, let it be. So if number of electrons will be 5 in case of intrinsic semiconductor, so what will be the number of holes? Obviously holes भी 5 है, तो E equal to H in case of intrinsic semiconductor, तो इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो होल भी 5 होगा. Now
तो व्हाट हैपेंड इफ आई विल डिस्टर्ब? सो नाउ मैं ऐड करूंगा टू इलेक्ट्रॉन्स, वी विल डोप, लेट इट टू इलेक्ट्रॉन्स हम डोप करेंगे। सो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो ऐड होने के बाद मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो दैट 7 इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। Okay, so we can say equilibrium carrier concentration, we are just denoting that equilibrium carrier concentration by ECC for less time consuming. ECC, that means equilibrium carrier concentration for majority charge carrier. Charge carrier. Majority charge carrier is equal to the intrinsic charge carrier plus free number of carriers, free number of carriers added by doping. So if my intrinsic carrier concentration, intrinsic charge concentration is 5 and two number of carriers added by doping, then what will be the majority equilibrium carrier concentration for majority charge carrier in extrinsic semiconductor? That is whatever the intrinsic charge carrier or the intrinsic charge carrier concentration is, that is 5 plus number of free carriers, that is free electrons is added, that is to equilibrium carrier concentration for extrinsic semiconductor is 7. Okay, got it? So now this condition, the ideal condition or initial condition, that means for intrinsic semiconductor, this condition, equilibrium condition, can be well established by a law that is known as law of mass action, which is very much important. Law of mass action, or sometime in university it is asked as mass action law. Mass action law. Okay, so law of mass action, what it what it states that the product of charge carriers is equal to the square of the intrinsic carrier concentration. That means in case of intrinsic semiconductor, if electron n0 is the carrier concentration of electron and p0 is the carrier concentration of hole. Yeah, carrier concentration, electron concentration, and this is hole concentration. Then as per mass action law or law of mass action, n0 and p0, product of the n0 p0 is equal to ni square, where ni square is the intrinsic carrier concentration. Okay, so remember this is for intrinsic semiconductor. Now what happened if that intrinsic semiconductor can be converted into the extrinsic semiconductor? So obviously loss of mass action will be disturbed or will be rewritten. Okay, so now let it be for n type. So n-type means we are, which kind of semiconductor is this? This is donor. N means donor. Donor type
semiconductor. So I can say N type means their N0 becomes the concentration of donor atom, that is Nd equal to donor atom concentration. Okay. So now what happen if N0 is equal to Nd? That means N0 P0 equal to Ni square. So Nd replaces N0, P0 equal to Ni square. So I can say the minority charge carrier P0 equal to Ni square by Nd. Okay. So now see P0 equal to Ni square by Nd. So what happened in case of P type? Just इसका ऑपोजिट होगा P टाइप. सो P टाइप में मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? दैट इज N0 Ni square by P type is nothing but acceptor atom by Na. So how it will come? You will do this, ठीक है, from this N type. So now see, observe the both equation. See, in that case, if I will increase, if I will increase the Nd, that means donor atom, in case of N type, donor atom is nothing but the majority charge carrier. If I will increase the majority charge carrier, obviously P0, the minority charge carrier, will decrease. Similarly, in case of p-type also, which is the minority charge carrier, majority charge carrier, that is Na. If I am increasing the amount of Na, that means I am decreasing the value of minority charge carrier. So by observing these two equations, I can come to a conclusion that minority charge carriers, minority charge carriers number decrease with the increase of the doping level. So doping level is nothing but the amount of doped element, that is Na or Nd in case of p-type and n-type semiconductor respectively. So this is all about your equilibrium carrier concentration of the semiconductor. Okay. Okay. So now let's move to the next topic, that is how temperature plays a vital role in carrier concentration. Okay. So I can say carrier concentration variation of carrier concentration with temperature. So before starting this topic, first of all, we have to know about the basic property of semiconductor. That means we all know that semiconductor lies between conductor and insulator. So sometimes it will act as an insulator, sometimes it will act as an conductor. So now question is when it will act as an insulator and what happen inside the conductor so that insulator can be converted into conductor. So now we all know that at the initial all the electronics device components or equipments except radioactive element all behave like insulator, or all not insulator, sorry, all are electrically neutral. So in case of semiconductor, what happened, we all know that at absolute temperature 0 Kelvin, semiconductor behaves like
Conductor? No. Semiconductor behaves like insulator. That means no electrons will move, no holes will be created, no charge carrier will be generated. So if uh, a semiconductor is behaving like insulator, then what happened inside the semiconductor so that it can suddenly it will behave like a conductor? So that is, we all know that by applying external bias. So this biasing or this bias is nothing but in terms of temperature, that is heat. So due to generation of heat, due to applying of heat, electron will get excited and semiconductor will behave like conductor conductor. Okay. So now uh, if semiconductor heat is applied or temperature is applied in the semiconductor, okay, so now obviously their carrier concentration will be disturbed, or their concentration will be what can I say, क्या बोलते हैं वो, carrier concentration में हलचल create होगा, and due to that हलचल your component, your material will behave like a conductor. So I can say in semiconductors, the carrier concentration refers to the number of charge carriers, as I told. Okay? In the semiconductor, carrier concentration refer to the number of charge carriers, which can be denoted by Ni, okay, per unit volume. The carrier concentration in semiconductor material can vary with temperature due to several factors like intrinsic carrier concentration, band gap energy and mobility of the charge carriers. तो ये तीन पैरामीटर से जिसके चलते तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन चेंज, कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो वो इट विल एक्ट एज अ semiconductor. What are those factors? Those factor is Ni itself, band gap energy, band gap energy, और एक क्या है, मोबिलिटी, mobility of charge carriers. So what do you mean by mobility? मोबिलिटी हम लोग आई होप पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे. जस्ट अ मिनट. In previous class or in previous class video, I think we have discussed about mobility. See, okay, conductivity I have discussed now. Okay, so mobility later on I will discuss. What do you mean by mobility? Is just for now you can say that mobility is nothing but the properties to move from one place to another place. That is mobility. So now, for intrinsic semiconductor, the relation between temperature and these three factors can be can be expressed by an equation. And that equation says that intrinsic carrier concentration, intrinsic carrier concentration at the thermal equilibrium increases with temperature. Okay, and it can be denoted by B T 3 by 2 e to the power minus Eg by 2 kT. This equation, try to keep in mind, where B is the temperature independent constant
temperature independent constant. T is the absolute temperature, absolute temperature. Eg is the band gap energy, band gap energy. K is the Boltzmann constant. E is the base of natural algorithm or natural logarithm. Logarithm. Not algorithm, sorry, logarithm. So by this equation, I can establish a relation between temperature increase and intrinsic carrier concentration. Okay, so now uh, what happened if I will increase the temperature? That means as temperature increases, you see at temperature increases, okay, at temperature increases, the intrinsic carrier concentration increases exponentially. Okay, E stands for exponential, that is base of natural logarithm. So at temperature increases, the intrinsic carrier concentration increases exponentially due to the temperature dependent term. Okay, because all other the temperature dependent things, that is band gap energy, Boltzmann constant is a constant, B is the temperature independent constant. So all are increases, all are if temperature will be increased, obviously my intrinsic carrier concentration will be increased exponentially. That means it will increase look like this exponentially. Okay, so now what happened inside the semiconductor? That means first it will affect the doping concentration. Doping concentration. Okay. Next is mobility, the factor which will be affect due to increase of temperature, mobility. And third one is band gap energy. This factor will be affected. So if we will summarize all these things, we can see that the carrier concentration in semiconductor material typically increases with temperature due to increase in intrinsic carrier concentration and the thermal generation of charge carriers. However, the exact relationship between carrier concentration and temperature can be complex and depends on various factors as doping concentration, mobility, and band gap energy. Okay, so this is all about how temperature will affect the uh, carrier concentration in the semiconductor. Okay, ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, ट्राई टू मेंशन इट कि समझ में आया हो या नहीं आया हो. इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस, write it in the comment box. Okay, so we will move to the next section, that is due to this ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है इसको डिस्टर्ब करने के वजह से या तो टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करने के वजह से मेरा जो एक हलचल हुआ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर के ऊपर, दैट मीन्स मे बी इलेक्ट्रॉन मे बी होल्स, इसके चलते मेरा जो मूवमेंट हो रहा है, दैट मूवमेंट इज डिफाइंड इन वेरियस टर्म. बिकॉज सपोज ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल सब है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम बाहर से हीट को अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड. तो ड्यू टू दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या हम लोग कह सकते हैं होल्स का मूवमेंट विल बी देयर. सो ये जो मूवमेंट होने के वजह से एक स्पीड में
एक वेलोसिटी में ये मूव कर रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट विल बी जनरेटेड, और आई कैन से ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल आल्सो करंट विल बी जनरेटेड। सो इसका एक पर्टिकुलर टर्म है, दिस करंट, generated current has a particular name that is known as drift current. Okay, so drift current. So drift current क्या होता है? That is, drift current is the electric current. Obviously, current or electric current. So drift current is the electric current or movement of charge carriers. So मैं इसको अगर define करूँगा, better मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. Drift current is the electric current which is due to the applied electric field. Okay. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है या होल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो बेटर आई कैन से ड्यू टू अप्लाइड एप्लीकेशन, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के वजह से जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, ड्यू टू दैट मूवमेंट्स ऑफ द चार्ज कैरियर सम करंट विल बी produced, and this produced current is known as drift current. So एक तो ये ड्रिप करंट है, दूसरा है एट द इनिशियल स्टेज जो मेरा इलेक्ट्रॉन होल्स है, ये क्या करेगा, आपस में ये एक अरेंजमेंट करेगा। लाइक जब हम तुम लोग देखे हो, जब हम लोग क्लासरूम में घुसते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सो बेटर टू गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम में जब हम घुसते हैं, खाली क्लासरूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग घुस के अपने में अरेंज करके अपने दोस्त या अपने जान पहचान या जिसके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करता है उसके साथ जाके बैठ जाते हैं, सेल्फ अरेंजमेंट। तो ये हो गया एक तरह सा अरेंजमेंट जो बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो मैं बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होल्स या चार्ज कैरियर आपस में अरेंज होके बैठ जाते हैं, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑल्सो current will be produced, because I know that if electron move, current will be generated, or in other word I can say if hole are moved, obviously current will be generated। तो ये सेल्फ अरेंजमेंट के वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है, जो which is very few amount of current, is known as diffusion current। diffusion current। सो यहाँ और एक कॉन्सेप्ट आ गया मेरा डिफ्यूजन करंट का। सो डिफ्यूजन करंट को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन करंट कैन बी इन द सेम ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। ओके, ये एक है। बेसिकली डिफ्यूजन करंट इज अ करंट इन सेमीकंडक्टर caused by the diffusion of charge carriers। That means चार्ज कैरियर आपस में जो इंटरनली अरेंज करता है उसके चलते डिफ्यूजन क्रिएट होता है, एंड दिस इज डिफ्यूजन of charge, and due to this the current is generated is known as diffusion current। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का मेन डिफरेंस क्या है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या क्या है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। दूसरा है ड्रिफ्ट करंट क्रिएट होता है ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट क्रिएट होता है, sorry, ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, हाँ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पे मेरा डिफ्यूजन करंट क्रिएट कैसे होता है, ड्यू टू डिफ्यूज्ड चार्ज कैरियर। डिफ्यूज्ड चार्ज कैरियर। So these are the basic
difference between diffusion and drift current. Or due to this diffusion and drift current generation, my electron or holes will move, will move. So this movement is nothing but your mobility. So I can say mobility. So mobility यहाँ पे किसका हो रहा है? That is mobility of charge carriers. Mobility of charge carrier. So mobility of charge carrier is the property of conductor defined as the ratio of drift velocity to applied electric field in conductor. So it is nothing but the ratio of drift velocity and applied इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर. एंड इट कैन बी expressed by a mathematical equation, that is mu is the mobility of charge carrier is equal to vd, that is drift velocity by applied electric field. So keep in mind this is the mobility of charge carrier. Okay. So see, यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके. अगर यहाँ तक किसी को डाउट है, दे आल्सो पुट योर डाउट ऑन इन द कमेंट सेक्शन. ओके. नाउ ये मोबिलिटी के चलते क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट. सो ड्रिफ्ट करंट जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो सेमीकंडक्टर एट द इनिशियल स्टेज इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर. सो ये इंसुलेटर जब होगा, मैं कह सकता हूँ हाई रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, बट नाउ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है. तो ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेमीकंडक्टर, क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर धीरे धीरे करंट को कंडक्ट कर रहा है. दैट मीन्स हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है. So obviously due to this produced current, my resistivity of semiconductor is gradually decreases. ओके. सो हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज कैरियर डेंसिटी. ऑब्वियसली अगर चार्ज कैरियर डेंसिटी के ऊपर मेरा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है. एंड द नंबर चार्ज कैरियर डेंसिटी. सो अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, तो क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, वो मेरा डिस्टर्ब हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड एंड दे लीव देयर place. Due to this living, okay, my current will be produced, drift current, and due to production of the drift current, क्या हो रहा है, मेरा resistivity धीरे धीरे घट रहा है. So obvious this is known as resistivity concept of semiconductor. Resistivity of semiconductor. सो ऑब्वियसली अगर रेजिस्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, ऑब्वियसली नॉर्मल जो रेजिस्टिविटी का इक्वेशन है, दैट इज रो इक्वल टू आर ए बाय एल. क्योंकि हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए. सो रो इक्वल टू आर ए बाय एल. So this is the resistivity for your semiconductor. That is R stands for resistance, A stands for area of the semiconductor, and L stands for length of the semiconductor. So this is the resistivity of the semiconductor. And obviously this mobility, resistivity, drift current and diffusion current is a very important part, and in university they will ask short question or direct question. They will ask short notes about mobility of charge carriers, resistivity of semiconductor, drift current, diffusion current, or difference between drift current and diffusion current. Okay. And this is the very important topic. So are you clear about this topic? Yes or no?
write in the comment box section. ओके, सो नाउ आते हैं इस मॉड्यूल का सबसे कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं कहूंगा, पर सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि जैसे मेरा एक सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फार्मी लेवल पे। ठीक है, तो फार्मी लेवल जब है दैट मींस एनर्जी बैंड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी बैंड जैसे ही कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट मींस मेरा एक डायरेक्टली टर्म आ रहा है एनर्जी। ओके, सो नाउ एनर्जी जैसे ही टर्म हो रहा है तो मैं जानता हूँ जैसे ही मैं बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंटरनली वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। एंड दैट हीट वो क्या करेगा, सेमीकंडक्टर के हर एक पार्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड दैट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस चीज को हम कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नाउ सिंस यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग एक टेक्निकल पेपर पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं जो भी बोल रहा हूँ दैट विल clarified only by the not only logic but also the mathematical equation. And that energy distribution inside the semiconductor is expressed by a mathematical expression called Fermi-Dirac function. Okay, Fermi-Dirac function. And what Fermi-Dirac function says? It says the number of free electrons per cube meter of a metal whose energies lies in the interval E to E plus dE is given by dNE equal to rho E dE. Okay, so this is the Fermi-Dirac function where dNE represent the number of free electrons. dNE represent number of free electrons per cubic meter. Okay, and rho E is density of electrons, density of electrons. Okay, this rho is not resistivity. Okay, these are different. So now क्या करते हैं, मैं actually basically क्यों Fermi-Dirac function क्यों, because it is important to know what energies are possessed by a mobile charge carrier in the solid or semiconductor. Okay, so for this we have to know the Fermi-Dirac function. इसका function का detail part तुम लोगों का नहीं है, so don't worry about it. Just you have to remember what Fermi-Dirac function says. That is, Fermi-Dirac function will establish the relationship between number of free electrons per cubic meter uh, and the energy distribution inside the semiconductor. Okay. Okay, so now we will move to the next topic, that is as per your syllabus, Poissons and continuity. Sorry, Poissons and continuity equation. So both are very important. Maybe it will be asked in short note section. Okay, or direct question. The state Poisson's equation or derive Poisson equation or continuity equation. So Poisson's equation states that the Poisson equation can be given by first we will move to the Poisson's equation.
Poisson's equation. So it states d e d dx e equal to rho by epsilon. Okay, so Poisson's equation can be represented by this equation, that d dx of E equal to rho by epsilon, where E is the applied electric field, yeah. Rho is the charge density, and epsilon is the material permittivity. Permittivity. Okay, so now if rho can be elaborated, charge density. So charge density mainly depends upon various factors, like rho depends upon, first of all, my hole density, that is carrier density, hole density. Next is electron density. Electron density. Next is acceptor atom and donor atom. So if I will rewrite the equation for charge density, it can be represented, that is rho can be represented by charge P of x, this is P of x, electron density, acceptor plus, sorry, acceptor density plus Nd. Okay, so now this entire equation, Poisson equation, can be rewrite like this: Q by epsilon Px minus Nx minus Na plus Nd. Okay, so remember this. This is the Poisson's equation. Direct question will be asked from this Poisson's equation. Okay, next is continuity equation. Continuity equation. So continuity equation, so this equation I can say, or we can say, the continuity equation keeps track of all carriers in terms of movement, generation and recombination. So ये क्या करता है, एक्चुअली ये क्या करता है, टोटल कैरियर मूवमेंट, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन को ट्रैक करता है. तो इसका मेन बेसिक थिंग्स क्या है, दैट इज tracks all the carriers in terms of movement, generation and recombination.
recombination. ओके, सो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज डी एन डी टी डी डी टी ऑफ एन 1/q, that is charge, d dx of jn minus u minus g. Okay, so now jn क्या है, where jn is the current density, हम लोग पहले पढ़े थे current density, u is the recombination rate, and g is the generation rate, generation rate. ओके, सो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है मेरा, and it can be modified, that is in thermal equilibrium or steady state condition the carrier concentration do not change with time. तो अगर carrier concentration मेरा time के respect में change नहीं होगा, that means ddt of n is constant, obviously it is zero at thermal equilibrium condition, thermal equilibrium condition. So now this equation can be modified like this: d ddt of n equal to 1 by q d dx jn minus u minus g. Now this, so इसको rewrite, so I'm changing the color. So at thermal equilibrium it is 0, so I can say 1 by q d dx jn minus u minus g equal to 0. So now I can modify it like 1 by q d dx of jn equal to u minus g. Okay, so now this is the modified equation of your continuity equation. Now Jn can be replaced by Jp also, because Jn, we know that Jn is the current density of electron. If n is negative charge carrier, so J is the current density of electron. So it can be, and if n is replaced by P, then it will know as a current density for majority charge carrier is holes. So obviously we know that electrons are holes and opposite in direction, so it has opposite polarity. So instead of this I can write minus 1 by q d dx jp equal to u minus g, or it can be modified by 1 by q d dx jp equal to minus u minus g. So these two are the continuity equation. Okay, so clear about this? If you have any doubt, again I am saying, write in the comment box section. Okay, are you clear about this? So okay, next topic from this module is my diffusion length and lifetime. So diffusion length means related length. So diffusion length is the average length of carrier moves between generation and recombination, because यहाँ पे मैंने generation और recombination के बारे में देखा, ठीक है. So now क्या करता है, diffusion length is the average length, that is diffusion length. Diffusion length is the average
length average length carrier moves between generation and recombination. ओके, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हम लोग जैसे क्लासरूम में घुस रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मैं जाके एक जगह पे बैठ गया, हम लोग ये हमेशा बस में करते हैं। सपोज बस में चढ़ा हूँ, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मुझे पहले से मेरा सीट रिजर्व नहीं है, मैं टिकट में मेरा सीट रिजर्व करके मैं बस में नहीं चला हूँ। मैं जस्ट सिंपली एक बस आया, नॉर्मल बस में सीट में जाके बैठ गया, एक सीट में, साइड वाले एक सीट में बैठ गया। नाउ आफ्टर सर्टेन पीरियड क्या हुआ, ये मेरा जनरेशन हो गया, ठीक है। जनरेशन हो गया कि मैं जाके एक सीट पे बैठ गया। तो नाउ सपोज आफ्टर सम टाइम मुझे मैं देखा हूँ कि बस का एक जगह पे जहाँ पे विंडो साइड है, वहाँ पे सीट खाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पुराने जगह से उठ के वो नया बेटर प्लेस में जाके बैठ जाऊंगा। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। सो नाउ ये जो जहाँ में मैं पहले बैठा था और नेक्स्ट अपडेट होके जहाँ पे मैं अभी बैठ रहा हूँ, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द डिफ्यूजन लेंथ। कि मेरा यहाँ पहले प्लेस से दूसरे प्लेस में मेरा डिफ्यूज हुए हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ है, दैट इज नथिंग बट द डिफ्यूजन लेंथ। नाउ ये डिफ्यूजन लेंथ के साथ ये लाइफ टाइम क्या होता है, ठीक है। लाइफ टाइम क्या होता है, अब देखो सपोज मैं जा रहा हूँ 30 किलोमीटर्स। तो मैं बस पे जैसे ही चढ़ा, पहले 20 किलोमीटर में जनरेशन वाले सीट पे बैठा, लाइक जनरेशन प्रोसेस में बैठा, लाइक उठ के मैं जब पहला वाला सीट पे जाके बैठ गया, ठीक है। पहला कंडीशन प्रीवियस एग्जांपल का ही, सीट पे जाके बैठ गया। तो मैं ये जो 30 किलोमीटर्स में 20 किलोमीटर्स में वो जनरेशन में जाके बैठा। नाउ अब बस आगे जा रहा है, ठीक, बस आगे जा रहा है। नाउ क्या होगा, सपोज विंडो वाला सीट खाली है, ठीक है। एक विंडो वाला सीट खाली हुआ। ना अब क्या करूंगा, जैसे ही विंडो वाला सीट खाली हो रहा है, दो कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो सकता है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, और भी आदमी बस में चढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ताकि वो दूसरा कोई पैसेंजर वो सीट को ऑक्युपाई ना करे, इसलिए मैं क्या करूंगा, तुरंत दौड़ के वो विंडो वाला सीट ऑक्युपाई करूंगा। सो तुरंत दौड़ के वो विंडो वाला सीट ऑक्युपाई करूंगा। तो मेरा मूवमेंट क्या हो रहा है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है। डिफ्यूजन लेंथ, जो जो मेरा डिफ्यूजन लेंथ था वो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए एक्टिवेट था। पुराने सीट से नया सीट जाने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लिमिटेड था, तुरंत हो गया। नाउ मैं देख रहा हूँ दूसरा कंडीशन क्या है, मैं देख रहा हूँ और पैसेंजर नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आराम से उठ के अपना सामान वामान लेके जाके मैं वहां पे जाकर बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन लेंथ का पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो काफी देर तक है। हाँ ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द लाइफ टाइम concept. So diffusion length is related to carrier lifetime by the equation L equal to square root of d tau, where L is the diffusion length, D is the diffusivity, and tau is the lifetime. Obviously, it is in second. So keep in mind that this is डिफ्यूजन लेंथ एंड लाइफ टाइम। ओके, सो यहां से भी शॉर्ट नोट आएगा। नाउ और एक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक इन दिस फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज टनलिंग प्रोसेस। तो टनलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग
विस्तार में डिस्कस करेंगे whenever we are going to study about the tunnel diode। ठीक है, तो टनलिंग प्रोसेस अभी के लिए जान लो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टनल का कॉन्सेप्ट। तो टनल क्या होता है, लाइक सपोज जहाँ पे टनल बनता है एक ह्यूज एरिया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पाथ by taking a huge area, we are just make a gateway, like एक पहाड़ है, ठीक है, देयर इज अ हिल। सो इस हिल का यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार को हम लोग क्या करते हैं, पाथ यहाँ से यहाँ तक नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, जस्ट अ गेटवे बना देते हैं। एंड दिस गेटवे इज बेसिक path to pass the charge carriers from one portion to another portion. So this concept is all about concept of tunneling process। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार में डिस्कस करेंगे whenever we are going to discuss about the tunnel diagram। Okay, so that much for today's video or this video। in this video, so ये चार जो पार्ट है, through this part we have completed unit 1। now go through this for video for module 1 or unit 1। if you have any doubts regarding any videos of the unit 1, you can directly write in the comment section, okay, I will definitely answer it, uh, or you can also ask me through my contact which is known to you all students of Ramgarh Engineering College। Okay, thank you all।